शुरुआत है ऑटिज्म की सही जानकारी। Trusted by parents worldwide. Call now Dr. Navdeep Sharma, world senior autism expert. 7791 006 006. ऑटिज्म मुक्त जीवन की सही शुरुआत है ऑटिज्म की सही जानकारी। Trusted by parents worldwide. Call now Dr. Navdeep Sharma, world senior autism expert. 7791 006 006. ऑटिज्म मुक्त जीवन की सही शुरुआत है ऑटिज्म की सही जानकारी। Trusted by parents worldwide. Call now Dr. Navdeep Sharma, world senior autism expert. 7791 006 006. ऑटिज्म मुक्त जीवन की सही शुरुआत है ऑटिज्म की सही जानकारी। Trusted by parents worldwide. Call now Dr. Navdeep Sharma, world senior autism expert. 7791 006 006. ऑटिज्म मुक्त जीवन की सही शुरुआत है ऑटिज्म की सही जानकारी। Trusted by parents worldwide. Call now Dr. Navdeep Sharma, world senior autism expert. 7791 006 006. ऑटिज्म मुक्त जीवन की सही शुरुआत है ऑटिज्म की सही जानकारी। Trusted by parents worldwide. Call now Dr. Navdeep Sharma, world senior autism expert. 7791 006 006. ऑटिज्म मुक्त जीवन की सही शुरुआत है ऑटिज्म की सही जानकारी। Trusted by parents worldwide. Call now Dr. Navdeep Sharma, world senior autism expert. 7791 006 006. ऑटिज्म मुक्त जीवन की सही शुरुआत है ऑटिज्म की सही जानकारी। Trusted by parents worldwide. Call now Dr. Navdeep Sharma, world senior autism expert. 7791 006 006. ऑटिज्म मुक्त जीवन की सही शुरुआत है ऑटिज्म की सही जानकारी। Trusted by parents worldwide. Call now Dr. Navdeep Sharma, world senior autism expert. 7791 006 006. ऑटिज्म मुक्त जीवन की सही शुरुआत है ऑटिज्म की सही जानकारी। Trusted by parents worldwide. Call now Dr. Navdeep Sharma. Namaskar. A very good day to you and a very warm welcome to today's live interactive session of ours where we generally try to discuss quality Ayurveda with you. And while we discuss Ayurveda with you, we take the maximum number of your questions in this live sessions. And today's live session is a special session on ABA. ABA क्या है? ABA जब हम गाइड करते हैं कैसे करवानी है वो ABA, ये आज के लाइव सेशन में आपके साथ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डिस्कस करूं. So when we talk about ABA, generally when parents they come to me, I always tell them that when we talk about autism, about which I always say that autism is a temporary phase in the life of a child if treated timely. Now having said that, it becomes so very important that the consultant, the physician under whom the treatment of your child is being done is qualified enough, is experienced enough to ensure that your child can come out of autism. I always ask the parents that whenever you are taking your little ones or even at times the elder ones to any therapy center, to any doctor who claims that yes, with the help of Ayurveda or with the help of psychotherapy or with the help of homeopathy or through any other pathy which he is using, he can bring your little one out of autism. He should be able to share with you multiple case studies where he has done it for parents. So, we are going to start today's live with a case study for you because as I just mentioned, thoroughly go through the degrees, thoroughly go through the case studies, and only when you are satisfied that yes, this is the right doctor, then start the treatment of your child with the doctor, because choosing the right kind of physician, of consultant for your child is the first step towards saying goodbye to autism. So let's start with a case study, after which I'll be moving to your questions. Yeah. Story of autism treatment. His speech has improved a lot and now he speaks in full sentences. His hyperactivity has decreased significantly. In terms of self-talk, we have achieved about 90% progress. This is the case study of Aditya Singh, a 4.5-year-old child diagnosed with autism. At a very young age, Aditya Singh showed multiple developmental challenges. Hi, myself Vidhi. I am a psychologist at NDK Nirogam Private Limited. I am working here under the guidance of Dr. Navdeep Sharma sir. Here we will discuss the case study for Aditya Singh. Aditya first consulted at our Chandigarh Center, where a detailed assessment was conducted in consultation with Dr. Navdeep Sharmaji. During the initial consultation, the major concerns reported by the parents were self-talking behavior and limited expressive speech. Within this, issues like hyperactivity, excessive self-talk, and frequently getting lost in one's own thoughts were very prominent.
Along with that, Aditya Singh showed signs of aggression, lack of eye contact, lack of command follow, and poor attention and concentration, including self-loss behavior and tactile sensory concern. Aditya Singh's detailed medical history was documented and evaluated before initiating treatment. Good day to all. Myself Dr. Shubham Sharma from NDK Nirogam Private Limited. I have been working over here from last 6 years under the supreme guidance of our senior most doctor, Dr. Navdeep Sharma ji. During the first meeting with patient Aditya, our senior most doctor, Dr. Navdeep Sharma, recommended few medicines for the kid. The name of medicines were Syrup Brainova Plus, 10 ml in the morning, 10 ml in the afternoon, and 15 ml in the evening. And another medicine were Cucolmita Eye Drops, 8 drops in the morning and 8 drops in the evening. Along with that, Mukta Bishti PV was given. The doses of Mukta Bishti was 0.0625 mg in the morning before meal. And the last medicine was Babuna Oil Drops. The doses were 5 ml, night ODHS. Followed by 12 ABA session under phycologist Vidhi. The focus of therapy included improving expressive communication, reducing self-talking behaviors, So welcome back, and I had to interrupt in between the case study because the number of questions which are coming from your way are too many, and I do not want to miss out on answering those questions. We will definitely be completing this case study somewhere in between my live session today. But before that, let me pick up my mobile and let me see which questions you are posting. The first question which I can see is from Mr. Pavan Kumar. So Pavan ji, welcome to our live, and the question which you are asking over here is श्री प्रिया आपने नाम बताया है ना बताया। मेरे दो क्वेश्चंस हैं। पहला, शिरोपिचु शिरोधारा नाभि बस्ती स्नेहन ज़्यादा गर्मी पर रहें, एसी नहीं होने पर कूलर के सामने चल सकते हैं कि नहीं? श्री प्रिया जी, कूलर के सामने नहीं चल सकते हैं। एसी में ज़्यादा टेम्परेचर करके 26 पर रखकर टेम्परेचर 27 पर रख करके आप कर सकते हैं। सो हमें याद रखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अपंचकर्मा, पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि निर्वात स्थान के ऊपर वी आर टू डू दिस थेरेपीज। व्हेन वी से निर्वात स्थान, इट मीन्स डायरेक्ट एयर coming in contact is not good while we are doing a panchkarma therapy. So the AC, what it does is it modulates and regulates the temperature, and if we do not keep it on a too much of chilling mode, still panchkarma can be done under it. But under a fan or a cooler where it is too much of air hitting us, that is not advisable as far as Ayurveda is concerned. And you started the treatment on 15th November 2025 through a video conferencing. You stayed at Chandigarh Center for 10 days and you stayed over there in March, and you met me on 11th March. The herbs which are going on have been shared with me, and the sessions which have been going over here are under Anjali. So what I would advise you over here is, since Anjali is having some of her exams, a bit irregular she is currently due to that, so I would really appreciate, मैं चाहूँगा कि आप अपना जो साइकोथेरेपिस्ट है आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, अपनी मोबाइल ऐप में जाना है। आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट आर रिस्ट पुश्ड वन, द नेम ऑफ ऐप इज रिस्ट पुश्ड वन, रिस्ट पुश्ड वन ऐप। आई वुड अप्रिशिएट टीम इफ यू कैन शेयर द लिंक ऑफ दिस मोबाइल ऐप इन द लाइव स्ट्रीम समवेयर। सो ये जो रिस्ट पुश्ड मोबाइल ऐप है हमारी, ये गूगल प्ले स्टोर, इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, इट इज़ अवेलेबल ऑन एप्पल ऐप स्टोर। You can download this app, and this app is equally beneficial for our new patients and our existing patients for choosing our interactive curriculum with you. You can get your coordinator changed from there, you can get your doctor changed from there, you can get your psychotherapist changed from there, you can have your video conferencing sessions from there. So it is one app solving too many things for you. So Wrist Pushed One. The basic Wrist Pushed app is also ours, but here the app about which we are talking, which we have shared the link over here in the live stream. It is Wrist Pushed One app. Do not miss out on downloading this app if you are in any way connected with us, and you can recommend this app to someone who really is hunting for a good Ayurvedic support. So I have also been shared
the medications which are being given to you. और the question is, श्रीप्रिया के पास वर्ड हैं लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है. मम्मी और पापा ब्लोइंग सकिंग कैसे करे, भूख और प्यास लगने पर बोलती नहीं है, रोना स्टार्ट करती है, बाथरूम और टॉयलेट नहीं बोलती. चिंता मत लगाएं, आई कैन अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट, जब टॉयलेट ट्रेन नहीं है बच्चा तो चिंता हो जाती है. लेकिन जैसे जैसे आगे सेशंस बढ़ते जाएंगे, और मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि श्रीप्रिया के केस में जो सेशंस अभी के लिए आप करवा रहे हैं वो सेशंस हैं ट्रेनिंग सेशन. अगेन सेशंस दो तरह के हैं, एक हैं ऑनलाइन सेशंस. उन ऑनलाइन सेशंस में एक करिकुलम है जो आप में से बहुत से लोग फॉलो नहीं करते हैं. आई विल like the team to share the banner for that curriculum. It is known as the ABA curriculum, जो हमारा YouTube के थ्रू होता है. That curriculum, if this one which we're going to share, this one. So this program which you can see on your screen, now this program is a program where what we have done is that the individual sessions you are going for your child, and they are definitely expensive sessions. We can't help it out because psychotherapy, the specific ABA which we want the parents to be doing, is a bit expensive. So what we have done over here is that there is a specialized program which we do in partnership with YouTube. We do 4 group ABA session through our senior psychologist. The psychologists which we have allocated to you, they are good psychologists, but the senior ones are even more expensive for their sessions, and some of them are outsourced, some of them are in-house with us. So what we have done is 4 group ABA sessions through our YouTube membership, and then 1 ABA session, because what I have been watching since long is that there is now a need where even I guide people about ABA. Because what happens is, many a times when I come across parents, they tell me that we are getting ABA done from a place nearby to our home. The biggest challenge which I face over there is that the kind of ABA which I want and the kind of ABA which is being done over there are entirely different. And as a result of that, OT is done on the name of ABA, which causes a lot of problem. So over here, what we need to be doing is that I will be personally giving 1 ABA, group ABA session. It's not possible for me nowadays to be individually giving any ABA session, but yes, I promise you that 1 ABA session from my end through this webinars which we'll be doing through this YouTube Platinum membership. It will be exclusive for all who are our members. And then 1 Ayurveda training session, where, because many a times you people ask questions on what diet can be given to the child, what kind of lifestyle changes are required. Generally my doctors explain it on my behalf, but again I have decided that it is very important that the common things are being guided by me. Along with this, there will be 1 live Panchakarma training curriculum module over there, and there will be some invitation sessions from those who are experts. So coming back from this, now this is really very important and a very good thing for all of those who are our existing patients, because when I say that the ABA about which we are talking and the one which is being done at your home by the normal psychotherapy centers are different, I really mean it. Both of them are entirely different. We need to be very sure on what is being done on our child. Now, even if we talk about sending our child to a school, even if we send our child to a school, we are very much concerned about choosing the best school, ensuring that the teacher of our child is giving the child ample time, the teacher is well qualified, because we as parents know that the future of a child depends upon what kind of schooling the child is receiving, what kind of teacher the child is getting. Similarly, here, when we are talking about a child who is not a normal child in regards of the mind, the child is having signs of autism or has been diagnosed as being autistic, the child is having some communication problems. We need to be very choosy about the psychologist, psychotherapist who is going to work on our child. It becomes really very important for us to realize that the normal psychotherapist, they mix up ABA and OT. Let me share the differences between ABA therapy
and OT with you. Can you share it on the screen, team? So when we talk about ABA, now these are the points of differences for you. Although when I talk about ABA, our ABA is entirely different from the ABA which we see normally being done everywhere. But over here, if I talk about ABA therapy and OT therapy, in generally occupational therapy, coming to the OT, it is for sensory regulation, it is for improving the fine motor skills, it is for daily life skills, it is for handwriting support, it is for body coordination. In all these aspects, you can see that OT is helping us in cases where it is a case of severe autism and we need some initial improvements in our child. Over there, yes, OT can be supportive, but at least 50% of you, when you come to a doctor for your child, these things are already good in your child. At the most, the child may be having some kind of sensory issues. So there we require ABA, which is on the behavior improvement. When you say that my child is hyperactive, how can OT reduce the hyperactivity of your child? It is the behavior improvement, the ABA, which is going to do that. The communication skills, the two-way communication which we want in our child can only improve when we are doing the right kind of ABA. Then the focus and attention improvement, the social interaction, the structured learning. In fact, when we say that everything that we want it to improve in our child, when we say that we want our child to be as normal as a normal child, we want our child to be at a stage where if there is a group of 6 children sitting, nobody can point out that this child ever had the slightest of signs or symptoms of autism. That is not going to happen by taking your children to those centers who have not done it for anyone till now. Our children are not meant to be experimentated. If we are getting something done on our child, it really becomes important that it is done, and it is done only and only through those who have been doing. So that's why I always request you, don't let anyone experiment on your child. If someone claims, if someone tells you that yes, I can do it for your child. And the irony of the thing is, just other day, Elite, one of my friends, he brought an Elite to my consultation cabin. I was having an OPD over here, and a parent who had met me around 6 years back. Now generally I take 1.5 years of time to ensure that a child becomes like a normal child if the child comes to me below 4.5 years of age, and for those coming above 4.5 years, I generally take 3.5 years. If the parents, they follow everything which we are guiding and do not mix up too many things and do not complicate too many things for us. That parent, what they did was, they started giving a lot of Ayurvedic stuff to the children. They were giving Swarna Bhasma, they were giving various kind of medicated ghees, they were giving those traditional Ayurvedic medications, no psychotherapy. OT was being given to the child, and an army-like training was being given to the child. It's not a case that the child won't improve with that. Unluckily, we had a child who was well trained, who was so much robotic that now after these many years, the parents had put the child in such a situation where it was tough for me also to ensure that the child comes to a normal life. So my request to you, if you're already there with us, or if someone has referred you to us, because by the grace of Almighty, our parents who are there with us are really very kind to us. They believe on us, they keep on referring various kids to us. So if you are there with us, please do remember, we don't need any outside support for ensuring that your child comes out of autism. We can do it merely by you following our style of ABA. The ABA which I generally guide to children. Let me explain it to you. Let me quote an example to you for what kind of ABA I generally guide. Now, for example, your child cannot say the word apple, and we want him to say apple. Now what we will do is, we will place an apple on a refrigerator or at a higher place where he cannot reach out himself. Now when we are to do that, we are to do that at a time when we know that our child is in a hungry phase. For example, if we know that we serve meal to our child at 1 p.m., we can do it at 12:30, 12:45.
Now we have placed that apple on the refrigerator, and we will do it in a way in which he has a look at it. We place it over there, the child will immediately start pointing toward that apple or shouting or blabbering, or the child will hold our finger and will take us to the refrigerator and ask us for apple. Now when I quote this example to any parent, the parents say, yes, we are doing that. And then I ask that when you do that, they will say, then we tell our child, firstly say this is apple, only then we are going to give you. Kya hai ye? Apple. What is this? Apple. No, this is not the way to do it, my friend. This is just the opposite to what we need to be doing, and this is what we are going to guide and train you in the upcoming ABA training sessions. We are doing a lot of wrong stuff in our children, and that is what is causing the problems in those children. So moving back to the questions, I'll again be taking some of your questions. I know you wait throughout the week and sometimes for 15 days if I am in an international session or a travel for your questions. So coming back to the next question. The next question is from Risha Puvarji. Risha ji, you have written, he cries when we enter small shops. Therapist advise observing triggers, but I would appreciate your suggestions on what might be causing this. Risha ji, if he cries on going towards small shops, we need to observe the behavior pattern. Is it the same with all the shops? Does he cry entering a small toy shop also? We need to be understanding whether he's having any phobia in his mind of small spaces, any claustrophobia or something like that. So we need to be going further into the probing of all this so that I can guide you further in this regards. And I will wait if your coordinator can further give me some details in this regards, because yeah, we are talking about Avik and Ashima has shared me the details in this regards now. And as I can see over here, Gurpriya is doing the sessions for you and Mitali is doing, but unluckily your coordinator Ashima hasn't mentioned on how many sessions till now have been done. Over here, what is very important for us to understand is that how many sessions till now have been taken by him. Be more regular with sessions in case of Avik. And I don't know when we last spoke to each other, but always remember, I always ideally say, although that makes my life tougher with so many parents connecting with me on video conferencing, always ensure every 6 months. Now this is something which is very important. See, I am having thousands of patients around the globe who are actively taking treatment from us. Even beyond thousands, I'll say it's in lakhs now. So it becomes tough for me to be connecting with parents every 6 months. But why I make this life tougher for me is that I understand the importance of analyzing every 6 months and then proceeding towards the next phase of treatment. At times when the parents, they get very satisfied with our treatments, unluckily, they will carry on with the same treatment. That is wrong. There are few guidelines which I really want to share over here. Even when I allocate psychologists to you, now what you have to remember when I am allocating psychologists to you is that each psychologist who is working currently in our team, I personally, what I do is, as I just mentioned, that the ABA which I developed is my own, by the grace of Almighty, development, my own research. So one part of my research was that no psychologist is complete to be doing everything for your child, and even if he or she can do that, it cannot be done with perfection. Just like when we go to higher classes, the physics teacher is different, the chemistry teacher is different, the maths teacher is different, the accounts teacher is different. In the lower classes, we have the same teacher. Similarly, for a child to be completely coming out of autism, we need to be having separate psychologists for sensory issues, separate psychologist for blabbering and for speech, separate psychologist for socialization, and similarly. So that is why when I have made teams of psychologists, each one has been specifically trained in a particular stream in which when they take trainings from me, I try to figure out which psychologist is going to be the better in which field. That is why while you are taking the psychotherapy sessions from us, we never fix up a single psychologist with you.
We always start with a single psychologist, then keep on adding the number of psychologists. The sessions increases, and that is why this platinum protocol, which I just mentioned, it has been running with us since long, but not everyone is taking benefit of it, because you get 4 different kind of psychologists guiding you up, working on your child. So even if you are taking one-on-one sessions from our team, which is important, do remember at times, once we know that one target of your child is completed, we may have to change the psychotherapist. And for that thing, to analyze that to a perfection, it really becomes very important that we are interacting with each other regularly. And that regularity is once in 6 months. Do not miss out that once in 6 months interactive program. Another thing which is important for us, I have seen a question coming very frequently from all of you about my next visit to UK. Most probably I will be visiting UK towards the ending of June. Earlier it was supposed to be in the beginning of June. It is towards the ending of June that I will be in UK due to some other priorities, and the UK visit will most probably be followed by the Canada visit. So those of you who are from UK, those of you who are from Canada, you can be connecting with your team for the upcoming meets, so that once we are over there, timely history taking, timely video making and everything can be done. It ideally takes around 1 to 1.5 months of time for my team to compile the history ideally. Once you interact with them at the end that yes, we want to meet, half of the thing is lost, because then they have less time to analyze the case. So you can get back to team for that, and I am getting back to the next question. But before I do that, I need to complete that case study. I know many of you are willing to go through that case study towards completion. So I'll be coming to your question. Stay with us, but we are going to complete the case study which we just left in between. Yes. Story of autism treatment. His speech has improved a lot, and now he speaks in full sentences. His hyperactivity has decreased significantly. In terms of self-talk, we have achieved about 90% progress. And 15 ml in the evening. And another medicine was cucumber oil drops, 8 drops in the morning and 8 drops in the evening. Along with that, Mukta Bishti PV was given. The dose of Mukta Bishti was 0.0625 mg in the morning before meal. And the last medicine was Babuna oil drops. The doses were 5 ml, night ODHS. Followed by 12 ABA session under phycologist Vidhi. The focus of therapy included improving expressive communication, reducing self-talking behaviors, enhancing attention span, and addressing sensory and behavioral concerns. Over a period of 6 months, Aditya's progress was closely monitored through regular intervention sessions and multiple health status follow-up calls with the parents. After 6 months of continuous treatment and therapeutic intervention, Aditya was brought for his second follow-up consultation with Dr. Navdeep Sharmaji in July 2025. Graphical representation and recorded therapy observations showed a reduction in aggression, in which throwing things reduced up to 50%, hair pulling 90% reduced, crying reduced 70%, hitting reduced 30%. In speech, child started sentence making, able to recall past events, improve. So welcome back once again, and we have again interrupted that case study. We definitely will be completing that, but because of the love of your questions and because of the importance of taking your question, I'm again moving to my mobile phone and I'm proceeding with your questions. So over to the next question once again. It becomes important to answer that. Shruti Prasanna ji. Shruti ji, you have mentioned over here that child name is Advi and is having recurrent seizures from February, and Navneet is the coordinator. I have been mentioned that you are from Bangalore. 11 years 4 months is the age. Breno plus Anapsamar capsule enzyme and Brihatava Chintamani is being given. Along with that, the allopathic medications, Valparin and extra are being given. The female hormonal test panel was normal. ABA is going on under pile. Here we will need a cognitive behavior therapy for the child. So please change your psychologist immediately
And in this case, we will be proceeding to team, you can note it, either Mitali or Devyanshi. They are a bit different when it comes to the psychotherapy charges, not too different. You can get back to team because we need a cognitive behavior therapy over here. Another thing which I would advise over here is sound healing. Sound healing therapy. You can get back to your coordinator. Aarti Arya ji is on our panel, one of the senior most sound healing experts on this earth. She has been working with us since long now, and sound healing is going to be good for your child for reducing these seizures. So these are the things which you need to be doing on that part. In the medication part, it is Jatamansi oil. The rest of the medicines you are giving, Jatamansi oil, add it 1 drop in the morning, 1 drop in the evening, and Mahapeshachik Ghritam, 1 ml in the morning, 1 ml in the evening. These two things, Jatamansi oil, you can see it on your screen, 1 drop in the morning, 1 drop in the evening to be added, and Mahapeshachik Ghrith, 1 ml in the morning, 1 ml in the evening to be added. And if required, team, you can prioritize them for the video conferencing. And I hope you are doing the Shiro Basti and Shiro Pichu at your home. Please update me in that regards also. It is very important. Fine, going further ahead. विवान 3 years 10 month है, वो अपने आगे के बच्चों से लेट वर्क करता है, वो सोशल भी नहीं है, अपने साथ के बच्चों के साथ खेलता भी नहीं है, हिटिंग भी करता है. एंड I have been shared the details from Narinder that Shipra ji, you are there with us, and the major concerns are aggression, temper tantrums, attention and concentration, socialization. Understanding is not age appropriate. Now, the most important thing which we need to be knowing and understanding over there is Vivan is yet 3 years and 10 months in old. Now, the best part in this regards is that when we talk about a child like Vivan over here, who is below 4.5 years of age, this age is really very important. So Shipra ji, you need to be connecting with one of our doctors in Vivan because 4.5 saal se pehle, below 4.5 years of age, whatever we are doing is going to be super quick. After 4.5 years of age, yes, we still ensure that the child comes out of autism and has those behavior modification which the parents are expecting from us. But do remember, after that, it is comparatively slower than below 4.5 months. So this time which we are talking about is really very important, but the irony of the thing is that unluckily, is age mein below 4.5 years, parents keep on waiting. Many times the family will tell, अरे आप भी ऐसे ही थे, late आप लोगों ने भी बात करनी शुरू की थी, and all that stuff. With due respect to the grandparents and those around you, what is important for us to understand is that yes, there might be a case where the parents were also like that, but उस ज़माने में और आज के ज़माने में अंतर है. तब सारी की सारी families combined थी, बहुत से लोग बच्चे पे वर्क करने वाले थे, आज नहीं. We have lost that talent of ABA in our grandparents, which used to be around 20 years back, and that is why now, along with the kids from various parts of the globe, I am giving consultations to the kids in India also. The number of kids coming to me for autism in India has also gone up. So, because a lot of things have changed, so please, this age is really very important, 3.10 years. That means we have 7 months on our hand of super quick improvement, which can be utilized. Going further ahead, Mr. Oliver, welcome you to this live. And dear Dr. Sharma, we have child Ryan, 7.1 years. We are very much concerned about our child, and the complete details have been shared with Nikhil, and Nikhil has been kind enough to share the details with me in a compiled format. I always appreciate when a coordinator does everything for the child, and Nikhil has shared the entire history with me. Like he has shared that Ryan is doing aimless walking and aimless jumping, and that is 4 out of 10, and then we grade it out of 5. Out of 5 as per ESA scale is concerned, 4 out of 5, and then aggression is 2 out of 5. When we talk about attention, the sitting tolerance is 10 to 15 minutes for interest-based activities and toys and games like stars. When we talk about speech, I have been told that blowing is present, sucking is present, and some sentences he uses on rare occasions. Now that is again good for us. It means that Ryan isn't completely non-verbal. When parents they approach us, in majority of the cases, the child is entirely non-verbal. And over there also, with the help of Ayurveda, the beauty of Ayurveda and psychotherapy combined,
It enables the child to come out of that situation. So this mere sentence that he has some words make it easier for me. So don't worry, other details of the child are there with me. The medical history is there with me. I won't be repeating everything up over here because it will take a lot of time. It has been mentioned that no MRI and anything like this has been done. I would appreciate if you can share some videos of Ryan for my team to analyze, for them to be sharing it with me so that my team can get back to you on my behalf. Yes, we definitely can connect directly also. It will take some longer time. So for the time being, the team can be connecting you on my behalf, and all the details which you have shared over with me, like sensory concerns are there, mouthing is there. Now all those will be well taken care of, but first of all we will reduce the sensory issues. We will increase the sitting tolerance. That will be the first step. There will be some herbs which we will be using. I'll be showing you those things, but yeah, the entire prescription will be discussed with me and shared with you. Brain-OR, it will be one of the things. The Brain-OR in the form of granules. Yeah, this one, the one which you showed was the milder one. This is the Brain-OR mild which you can see on the screen. This is not the one which we are going to give you. The Brain-OR regular one, the red colored Brain-OR will be the one which will be coming to you, and along with that Brain-OR we will be using pumpkin seed oil for your child. That will be the second thing, and the third thing which we will be using will be Mukta Pishti. So these are the major things which we use commonly in children, where the children are like your child, but the exact dosage, and maybe I need to use some Jatamansi oil looking at those sensory concerns. Let me get back to the team and be prescribing everything to them, and Nikhil will be connecting back to you on my behalf on this. And moving further ahead, Mr. John Wick. Hi, good day doctor. I hope you all are doing well. Waiting to meet you in London for another child having Down syndrome. Need your guidance. Mr. John Wick, really appreciate your words are always encouraging for us, and I am also looking forward to meet you in London. Going further ahead, dear Dr. Sharma, we have child Ryan, 7.1 years. We are very much concerned for our child, and I just acknowledged it. The message has again been flashed to me. Peaceful progress is the next ID. Joe is vocal, shows rocking behavior and seeks hand sensations. However, he is very lazy. His urine and bowel, sleep, body stiffness is fine. What dose should I give? Hypo or hyper? The balanced dose at this stage. Neither the hypo nor the hypo. Immediately get back to the team. We will go for a balanced, as he is currently in a more balanced stage. And the team will be guiding you in that. And please do remember, regular Abhyangam is very good for your child. Start doing it at your own home. And we also talked about someday of bringing Joe sometime here to India. So what are the prospects of that? Also update me on that. And please do regular massages for him. And that will really help. And going further ahead, Rajiv Ranjanji. Vaibhav has concentration issues and remembering of facts. ABA sessions are going on regularly. Please suggest. If Raghav is having concentration issues along with the ongoing ABA sessions, Vachadi Grit can be added with the rest of the medications. You can get back to the team, and in this season you can add on Vachadi Grit with the rest of the medications. The next question is Musaddar Ali ji. Patient ID shared. Sir, I am Aman Ali. My mother is suffering from Alzheimer's disease for 4 years and she is not able to talk and walk, and memory loss is 100%. Really sad to know that. It really becomes very agonizing for anyone in the family when their elder one is suffering from Alzheimer's and the memory starts fading away. So that is really very sad to know. MRI shows cerebral atrophy. Now this is the most common thing. Generally when we talk about Alzheimer's, it accompanies with an associated cerebral atrophy, which may be due to autoimmune reasons, which may be due to multiple other reasons. And I would also appreciate if you can share the MRI with us in that case. After demise of mother-in-law, condition worsened. Yeah, when a mansik rog, a mental stress associates with an ongoing cerebral atrophy, it is very quick that these things happen. And now self-laugh, no speech for 6-7 months, homeopathic treatment is showing all activities. And see, the most important thing for us to understand over here is, first of all, I would like to know your location to be able to understand if you can visit us, if you can be over there with us for Panchkarma, because in such cases, Nasya, Shirobasti, Dhara,
Asthapan and Ubasan Vasti, we have to go for a war footage treatment when we really want Alzheimer patients to come back. So it is very important. Yeah, there are certain things which you can do at your own home. My team will be guiding you on that. There are some medicines which you can immediately start. Breno A is one of them. You can go for a Breno A, immediately start it without further delay. You can add Vachadi Grit, which I just spoke about, along with Breno A and Vachadi Grit. You can go for a Manasmatra Vadakkam, that again is good for your mother. But having said that, it's really very good if we can be associated somehow and if you can start some Panchkarma for her. And going further ahead, the next question is from Fiza Miraz ji. And you have mentioned Talha sir, visual concern, teeth tapping guide. Navneet is the coordinator. Sensory concerns are too many in Talha, but as I discussed last time, the number of sessions, as I can see over here also, the sessions which we are doing for Talha are too less than what we require. So Talha ke case mein we need to be going with more number of sessions, especially the compression sessions. And in Talha, you are taking sessions from Mitali, but I would appreciate if you can involve Viti in this session. You can get back to team for some Viti session. You can do that through your own mobile app also. As I just mentioned to you, for those of you who have joined us now, you can always take our support through our mobile app, the link of which was earlier shared by team over here. The link is again going to be shared over here for our mobile app. That will be really helping you out. And if you are our existing patient, the Platinum ABA group protocol, I would appreciate if you can share a team over here. The banner once again, what exactly is that protocol? You can see it over here. This includes 4 exclusive ABA group sessions, and they are very important because 4 brains working for your child, guiding your child. I myself try that I can be over there, 1 session from my end, 1 Ayurvedic guidance, then a Panchkarma online session, this all and some other associated benefits, because we really want you guys to be connected with us. It is very important for us to understand that if we really want a child to come out of autism, that is not only going to happen through medicines, not just autism, any disease. We just spoke about Alzheimer's. There are patients who come to us for Parkinson's, there are who come to us for schizophrenia, for bipolar, for depression, anxiety, lot many diseases. Ayurveda never believes in simply advocating medications to your patient. Ayurveda says Ahar, Vihar and Aushad. And being an ABH certified, the best part is that if you are there with us, where we are managing your Ahar, we are managing your Vihar, and we are managing your Aushad, so that when by the time you go from our center, you have had desired recovery, that can always happen on your medical insurance without you spending anything up. That is why we are an ABH certified. So moving further ahead to the next question. The next question is from Swati Gangwar ji. And Tarun is the coordinator. वृंदा में इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है बट एज अप्रोप्रिएट नहीं है. 3-4 दिन से उसने गोल गोल घूमना शुरू किया है. हर लेग्स आर इन्वर्जन. और हमने चंडीगढ़ में ओपीडी से मेडिसिन ली थी बट ब्रेनो आर पहले जैसी कंसिस्टेंसी वाला नहीं है, तो इशू रिजॉल्व होने में बहुत टाइम लग गया. कंपाउंड ऑयल 2 चल रहा है. पहले कंपाउंड ऑयल 6 चलता था. अब समर है, टेम्परेचर हाई है, कंपाउंड ऑयल 2 ठीक रहेगा. देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि हम जितने भी कंपाउंड्स यूज़ कर रहे हैं वो सारे ही कूलिंग इन नेचर हैं. और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ कंपाउंड यू आर टेलिंग मी, आई विल हैव टू गो थ्रू द इंग्रेडिएंट्स. सो प्लीज़ write this message on your WhatsApp number, so that once you write it on your WhatsApp number, on the number which you can see on the screen, my team can discuss with me and get back to you on this regards. So ताकि वृंदा का केस हम और बेटर तरीके से देख पाएँ, समझ पाएँ. सो बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए समझना कि ऑटिज़म से निकलने के लिए और किसी भी रोग से निकलने के लिए सही तरीका, सही शुरुआत, अगर हम वाकई में ही चाहते हैं कि हम सही तरीके से गुड बाय बोल सकें डिजीजेस को, तो ज़रूरी है सही डॉक्टर का चुनाव. मैं अक्सर बोलता हूं, चिकित्सा में चतुष्पाद बहुत इंपॉर्टेंट है. द 4 फैक्टर्स फॉर ट्रीटमेंट. पहला, वैद्य, द डॉक्टर. इट बिकम्स सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट द डॉक्टर विच यू आर चूजिंग फॉर योर फैमिली इज क्वालिफाइड. मेरे नाम के साथ आप हमेशा डिग्रीज देखते हैं. उस मालिक की रहमत से बहुत मेहनत करके डिग्रीज आई हैं और मेरी टीम में भी
You will see MD doctors, you will see BMS qualified registered doctors, you won't see quacks. So please remember, when you are going to anyone, do search for the degrees. That is the doctor, so that you can ensure that the doctor who is giving treatment to your child is qualified, God-fearing, and knows the subject he is dealing. The second comes the Auchest, the medicine. And when we talk about medicine, even if a doctor is good but the medicine is not good, nothing is going to happen. So here at ND Care, we are blessed that we always say, from farm to your table. Our cultivation is our own, our herbal extraction is in our units, and then the final manufacturing with age-old traditional Ayurvedic methods is done by us, so that the medicine which reaches you is of utmost quality. The third is the rogi, that is the patient himself. The patient should be like this, that he should follow the dietary guidelines, the do's and don'ts and everything. And the fourth are the paricharak, those people who are around the patient. And in this case, the paricharaks are your psychotherapists, the one whom we are allocating you up if you are taking treatment from us in a psychological disease. If the paricharak is good, the one guiding around for the child is good, then with these four chatushpads, your child can say goodbye to autism, and autism can become a temporary phase in the life of your child. So for all of you who joined us today, I once again request you, a humble request, your likes and your shares for our videos really matter a lot to us. So don't forget to like our video, don't forget to share our video. Stay wrist pushed. Namaskar. ऑटिज्म है क्या? देखिए, ऑटिज्म एक ऐसा रोग है जिसमें आपका जो बच्चा है वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा आपके साथ, वो नेम रिस्पांस नहीं देगा, ऑटिज्म के अंदर बोल नहीं पाते। अच्छा, लेकिन ऑटिज्म के बारे में क्या ये एक हेरिडिटरी बीमारी होती है? कई बार हेरिडिटरी है तो नहीं, लेकिन बहुत बार इसे हेरिडिटी के साथ जोड़ दिया जाता है। एटलीस्ट 70% ऑटिस्टिक बच्चों में कोई शारीरिक कारण नहीं, हमारा आज का चेंज्ड लाइफस्टाइल, जिसमें बच्चे को छोटे होते ही मोबाइल मिल रहा है। ये ऑटिज्म जो है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी पहचान कैसे होती है? करता है कि पेरेंट सीरियस कितने हैं। देखिए, आप जब ऑटिज्म के क्योर की तरफ जाते हैं तो आप आयुर्वेद के साथ साथ वो साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बिल्कुल दो अलग अलग पद्धतियां हैं, मतलब कहाँ आयुर्वेद और कहाँ साइकोथेरेपी। आपने ये फॉर्मूला कैसे इजाद किया? विपाश्य चल रहा है, युक्ति विपाश्य चल रहा है, सत्वावज्य मिसिंग है जो सबसे जरूरी चाहिए ऑटिस्टिक बच्चों में। सो सबसे पहले मैंने MSc साइकोलॉजी किया, फिर दोनों चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर के PhD किया, रोल ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, और आयुर्वेद और साइकोथेरेपी इन दोनों को मिला करके बच्चे धीरे 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 ऑटिज्म से निकलने आज की ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। स्ट्रेस हो जाता है तो फिर मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी एक चुनौती बना हुआ है। तो तनाव, चिंता, अवसाद से जूझ रहे लोगों के लिए भी आयुर्वेद में समाधान है। आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं और अगर हम मानस रोगों की बात करते हैं तो मैं कहूंगा समाधान है ही आयुर्वेद के अंदर। में क्या होता है, मेडिकल इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, तो आयुर्वेद के इलाज में भी क्या ये सुविधा मिल पाना संभव है डॉक्टर साहब? हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी NABH सर्टिफाइड है और सभी मेजर इंश्योरेंस कंपनीज कैशलेस भी और नॉर्मल कवर भी आपके पूरे इलाज के लिए देती हैं। तो आप आयुर्वेद को भी ठीक उसी तरह से बिना अपने बजट को बिगाड़े हुए इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप एलोपैथी को करते हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आपको बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर की ओर। अप्रैल के महीने में हमने अभी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर मनाया। एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा करती है। तो इस चर्चा को आज और आगे बढ़ाएंगे। बदलते दौर में हेल्थ केवल शरीर तक सीमित नहीं है, फिजिकल के साथ साथ अब मेंटल हेल्थ का महत्व दुनिया समझ रही है और सब मानने लगे हैं कि तन के साथ साथ मन की सेहत को संभालना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी अहम विषय को और गहराई के साथ जानने समझने के लिए हमारे साथ एक ऐसा नाम जिनकी पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। एमिनेंट एंड ग्लोबली अक्रेडिटेड आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और साइकोथेरेपी के माध्यम से लाखों जीवन संवारने वाले, होप ऑफ मिलियंस कहलाने वाले डॉक्टर नवदीप शर्मा स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आयुर्वेद के क्षेत्र में आपको 2 दशकों से अधिक का अनुभव है। आप ब्रिटिश संसद और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्मानित हैं और आपको प्राणाचार्य की उपाधि से भी
अलंकृत किया गया है। आप एनडी केयर निरोगम प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं, जिनके 32 से ज्यादा सेंटर्स और 2000 वर्चुअल सेंटर्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर नवदीप। नमस्कार रोमाना जी। पहला सवाल तो मेरा ये, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर हम लोग बात कर रहे हैं, आज का ये दौर जब मेरे ख्याल से हर घर में कोई ना कोई शख्स ऐसा है लाइफस्टाइल डिजीज से जो जूझ रहा है, क्या आयुर्वेदा इस मामले में वरदान साबित हो सकता है? इस मामले में तो रोमाना जी आज पूरा विश्व एक उम्मीद की किरण के साथ आयुर्वेद की ओर देख रहा है। देखिए, आज हम देखते हैं कि वो जो इन्फेक्शियस डिजीजेस का एक दौर था, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन वो हैं। लेकिन जो डिजीजेस आज सबको परेशान कर रहे हैं वो है डायबिटीज़, ओबेसिटी, कैंसर, हाइपोथायरॉयडिज्म, किडनीज आप देखिए कितनी यंग एज में आज खराब होने लग गई हैं, पार्किंसंस तंग करने लग गया। ये ऐसे रोग हैं जिन रोगों में आज हमारे एलोपैथिक मेडिकल साइंस में कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रीटमेंट नहीं है। सो आयुर्वेद को एक सपोर्टिव पैथी के तौर पे और बहुत सारे केसेस में एक मेन पैथी के शेप में जो है आज दुनिया लेती है और इलाज करवाती है, और बहुत से अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक जो क्वालिफाइड हैं इन रोगों में लाभ पहुंचा रहे हैं लाखों ही रोगों को पूरी दुनिया के अंदर। अभी आपने क्योंकि एलोपैथी से कंपैरिजन किया, सर ये लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं, तो एलोपैथी के अंदर एक लिमिटेशन दिखती है कि साहब वो इस डिजीज को कंटेन कर पाते हैं, परमानेंट क्योर नहीं है ना? तो क्या आयुर्वेद में इन लाइफस्टाइल डिजीजेस को लेकर मुकम्मल इलाज ऐसा भी कोई विकल्प है? देखिए, सबसे बढ़िया बात तो आयुर्वेदा, देखिए वेद है आयुर्वेद, एलोपैथी पैथी एक मेडिकल ट्रीटमेंट साइंस। आयुर्वेद में सबसे बढ़िया क्या है? स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करिए। आयुर्वेद ये कहीं नहीं कहता है कि आप केवल रोगी हैं तो आयुर्वेद अपनाएं। सही समय पर दिनचर्या, कितने बजे उठना है, कैसे उठना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितने बजे सोना है, किस ऋतु में क्या खाना है, ऋतुचर्या, कैसे जीना है, आपकी प्रकृति वात पित्त कफ क्या है, उसके अनुसार आपने जीवन कैसे जीना है, ऐसी छोटी छोटी बातें अगर आप आयुर्वेद में अपनाते हैं, रोगों से आप वैसे ही बच पाएंगे। और जहां तक बात है परमानेंट सोल्यूशन की, तो आयुर्वेद ये कहता है निदान परिवर्जनम। आयुर्वेद का ये मानना है कि एक रोग को ठीक करना है तो कारण को दूर कीजिए। आज जनरली हम एलोपैथी में जाते हैं, हमें अगर बुखार भी हो गया, हम डॉक्टर से पूछते हैं हमें परहेज क्या करने हैं, हमें कहा जाता है परहेज नहीं, बस आप ये दवाई खाइए। हम पेन के लिए जाते हैं, आर्थराइटिस है, परहेज क्या करने हैं, कोई खास परहेज नहीं, केवल हमें पेन किलर्स खाने हैं। आयुर्वेद कहता है कारण दूर करिए, निदान को दूर करिए, और अगर निदान दूर किए जाते हैं तो आयुर्वेद ये कहता है जो परहेज करता है उसे किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है, और जो परहेज नहीं करता है उसे भी किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जिसने परहेज किया वो बीमार होगा ही नहीं, और जिसने परहेज नहीं किया वो ठीक होगा ही नहीं। सो डेफिनेटली आयुर्वेद आपको जड़ से रोगों का खात्मा दे सकता है, बशर्ते आप परहेज जरूर करें। अच्छा, हमने लाइफस्टाइल डिजीजेस की तो बात की, लेकिन आज की ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। स्ट्रेस हो जाता है तो फिर मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी एक चुनौती बना हुआ है। तो तनाव, चिंता, अवसाद से जूझ रहे लोगों के लिए भी आयुर्वेद में समाधान है? आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं और अगर हम मानस रोगों की बात करते हैं, तो मैं कहूंगा समाधान है ही आयुर्वेद के अंदर। और उसका कारण क्या है? आज अगर हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, और चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो ओसीडी है, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, बहुत बढ़िया लाभ दे रहे हैं। लेकिन क्या एक स्टेज पर जाकर दवाइयाँ बंद हो रही हैं? बहुत से केसेस में हम देखते हैं दवा शुरू हो जाती है, दवा चलती ही जाती है, लाइफ लॉन्ग होती है। बिल्कुल। बहुत कम है कि रोग से खत्म हो पाए। सो आयुर्वेद में अगर आप आयुर्वेद का रुख करते हैं ऐसे किसी भी मानसिक रोग के लिए, कृपया ध्यान रखिए, मिरेकल्स एक्सपेक्ट मत करिए। आज बहुत से क्वैक्स मिरेकल्स के नाम पर आपके बाइपोलर डिजीज के अंदर आपकी सारी मेडिसिन बंद करवा देंगे एलोपैथी में। क्या होगा? मैनिक फेज आ जाएगी,
सिजोफ्रेनिया में मेडिसिन बंद करवा देंगे, ऑल ऑफ अ सडन अटैक्स आने शुरू हो जाएंगे सिजोफ्रेनिया मतलब एलोपैथी वाली दवाइयां जो आपकी चल रही होती हैं उसको बंद करवा देते हैं और हमें वो नहीं करनी है। आयुर्वेद से शुरू में हमें सहारा लेना है, आयुर्वेद से शुरू में हमें जीवन शैली में परिवर्तन करना है। पंचकर्मा में शिरोधारा, शिरोबस्ती, मेडिटेशन, ये सहारा लेकर के धीरे धीरे अपने साइकेट्रिस्ट की मदद के साथ ही हमें उन एलोपैथिक दवाइयों से पार आना है। सो आयुर्वेद एक उम्मीद है, आयुर्वेद जड़ से आपके मानसिक रोगों को खत्म कर सकता है। लेकिन ना एलोपैथी को दुश्मन मानना है, ना आयुर्वेद को दुश्मन मानना है। रेल की पटरियों के बीच में बहुत सी जगह है, हमें इस पार या उस पार नहीं होना है, हमें बीच का मिला जुला होलिस्टिक अप्रोच अपनाना है ताकि हम एक रोग को हरा पाएं। अच्छा नवदीप जी, मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रही थी तो देखिए हम क्या सुनते आए हैं कि स्वस्थ शरीर होगा तो मन अपने आप में स्वस्थ रहेगा, लेकिन आपका जो फलसफा है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। आप ये कहते हैं कि स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर की ओर, तो ये नई फिलॉसफी आप क्यों लेकर आए? ये फिलॉसफी सबसे जरूरी फिलॉसफी है आज की डेट में समाना जी। उसका कारण ये है कि आज की जिंदगी में दवाइयां खा खा के बड़े हॉस्पिटल्स में जाकर के एक व्यक्ति अपनी आधी ठीक होने की उम्मीद वैसे ही खो देता है। सो बहुत जरूरी है हम कोई भी पैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पे अगर हमारे पास एक व्यक्ति आयुर्वेद में किसी भी चीज के इलाज के लिए आता है, हम उसके मानसिक स्वास्थ्य पे काम जरूर करते हैं। और अगर एक व्यक्ति मानसिक तौर पे स्ट्रांग है, डरा नहीं हुआ है, बड़े से बड़े रोग को भी वो हरा देगा। और वहीं अगर एक व्यक्ति दिल छोड़ गया है, तो खास तौर पे जो गंभीर रोग हैं, एक व्यक्ति है किडनीज डैमेज है, डायलिसिस करवा रहा है, एक व्यक्ति है कीमोथेरेपी करवा रहा है, बड़े बड़े रोगों में उतना रोग खराब नहीं करता जितना मनोबल खत्म हो जाना, जीने की उम्मीद छोड़ देना खराब करता है। यही कारण है इन सभी रोगों में बहुत से लोग जो एलोपैथिक इलाज भी करवा रहे हैं, वो लोग भी हमारा सहारा लेते हैं साथ में, ताकि हम उनके मनोबल को उस लेवल तक रख पाएं कि वो उन रोगों से बाहर आ पाएं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, पहला मतलब आपका अगर करियर ग्राफ देखा जाए तो पहले जो है जो शरीर के रोग होते हैं उनके आप इलाज पर ज्यादा आपका फोकस था, लेकिन अब ये शिफ्ट दिखता है, मानसिक रोगों पर आपका खास फोकस रहता है। तो फिर ये शिफ्ट कैसे आया? ये शिफ्ट आना बहुत जरूरी था। ये समय की मांग बन गया था। जब मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, किडनी डिजीजेस, हेपेटाइटिस, ऐसी बीमारियों में मैं लोगों को ज्ञान दिया करता था कि आयुर्वेद में क्या किया जा सकता है। मैं कहीं भी क्लेम नहीं किया करता था। मेरे बहुत से ऐसे वीडियोस थे जो वायरल होते थे, लोगों ने सुनते थे। धीरे धीरे मैंने देखा कि लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत से लोग जो ठीक रह सकते थे डायलिसिस करवाते हुए भी केवल इसलिए खराब हो गए कि किसी ने गारंटी उठा ली कि हम आपके डायलिसिस बंद करवा देंगे। मुझे लगा नहीं, ये सब कुछ गलत तरफ जा रहा है। सो मैंने धीरे धीरे करके ऐसे कोई भी रोग, जिन रोगों में क्लेम नहीं करना चाहिए, जिन्हें आयुर्वेद को एक सहारा बनना चाहिए एलोपैथी का, और मिल करके रोगी को उससे उबारना चाहिए, उसका इलाज घटा करके मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना शुरू किया। इस बीच कोविड आ गया। कोविड में ऑटिज्म बच्चे, ऑटिज्म नाम की बीमारी एकदम से ऐसे बढ़ गई कि समय ही नहीं लग पाया उसके बाद कि मैं शारीरिक रोगों वाले पेशेंट्स को कंसल्ट भी कर पाऊं। और आज इतने ऑटिस्टिक इतने पेशेंट्स आए आपके पास? बहुत से मतलब कोविड तो समाना जी एक ऐसा दौर था जिसमें आगे क्या था, मैं जब ऑटिस्टिक बच्चों को कंसल्ट करने के लिए जाता था तो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं हम जिन्हें कहते हैं, जैसे यूएस, कनाडा, यूके, वहां बच्चे अधिक ऑटिस्टिक हुआ करते थे। कोविड के बाद से तो हमारे भारत में भी इतना अधिक इंस्टेंस बढ़ गया ऑटिज्म का कि आज अगर हम डाटा की बात करें, 1 out of every 68 children is autistic child। लेकिन आप ये आंकड़ा दे रहे हैं डॉक्टर साहब, पर एक हकीकत ये भी है कि अभी भी लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस, जागरूकता है नहीं। तो मुझे लगता है पहले आपको दर्शकों को बताना चाहिए इस बीमारी के बारे में, ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म की जब हम बात करते हैं, देखिए ऑटिज्म एक ऐसा रोग है जिसमें आपका जो बच्चा है वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा आपके साथ। बहुत बार आप नाम से पुकार रहे हैं, वो नेम रिस्पॉन्स नहीं देगा। बहुत से बच्चे ऑटिज्म के अंदर बोल नहीं पाते हैं, अगर बोलें भी तो पापा, मम्मा,
कुछ सिंपल वर्ड्स या नीड बेस्ड स्पीच के अलावा अधिक बात नहीं करते हैं, और इनमें से बहुत से बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं, कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम होता है। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण बच्चे में हैं, समय रहते बहुत से टेस्ट हैं साइकोलॉजी के अंदर, जैसे ईसा एक टेस्ट है, चेक करवाया जा सकता है कि कहीं बच्चा ऑटिस्टिक तो नहीं है। जी। अच्छा, लेकिन ऑटिज्म के बारे में क्या ये एक हेरिडिटरी बीमारी होती है? कई बार तो ये भी देखा गया है कि माँ बाप और उनके दो बच्चे, एक बच्चा ऑटिस्टिक है, दूसरा बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है, नॉर्मल है वो। सबसे बड़ी बात हमें ये ध्यान रखनी है, हेरिडिटरी है तो नहीं, लेकिन बहुत बार इसे हेरिडिटी के साथ जोड़ दिया जाता है। वो कैसे? टेस्ट करवाए जाते हैं बहुत सारे। डॉक्टर्स जब बात करते हैं पेरेंट्स उनके साथ, सबसे दुख की बात क्या है कि आज कोई भी एक मेडिकल साइंस एलोपैथी के अंदर नहीं है जो पर्टिकुलर ऑटिज्म को देख रही हो। तो ऑटिस्टिक पेरेंट्स क्या करते हैं, या न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, या साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास चले जाते हैं। ये सारे ही लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन इन पर्टिकुलरली अगर हम देखें कि कोई पर्टिकुलर ऑटिज्म कोई डील कर रहा है तो ऐसा नहीं है। तो हर डॉक्टर इनमें से अपनी समझ के अनुसार कारण बताते हैं ऑटिज्म के। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो एमआरआई करवाने को बोल देंगे, अलग तरह का कारण बताएंगे। पीडियाट्रिशियन हो सकता है जेनेटिक एसे करवाने के लिए बोल दें। लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, एटलीस्ट 70% ऑटिस्टिक बच्चों में कोई शारीरिक कारण नहीं, हमारा आज का चेंज्ड लाइफस्टाइल, जिसमें बच्चे को छोटे होते ही मोबाइल मिल रहा है, बहुत अधिक समय के लिए वो टीवी के सामने बैठा है, फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, वो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची जो डांट दिया करते थे, बच्चे के साथ खेला करते थे, सारा सारा दिन बच्चे से बातें किया करते थे, कहीं ना कहीं खो गया है। सो वो लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण आज बहुत से बच्चे ऑटिज्म की इस बीमारी से जूझ रहे हैं। मेडिकल रीजंस नहीं है, साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। सर, ये ऑटिज्म जो है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी पहचान कैसे होती है? क्या बिल्कुल छोटे से बच्चे में इसकी पहचान हो सकती है, या फिर वो जो स्कूल गोइंग एज होती है कि जब बच्चा प्ले स्कूल जाता है, जब बाहर वालों के संपर्क में आता है, क्योंकि घर में बच्चा है, घर वालों को तो बच्चा उन्हीं की आंखों के सामने पल रहा है, वो समझ नहीं पाते हैं। जब वो बाहर निकलता है, प्ले स्कूल जा रहा है या वो नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लेता है, तब ये बीमारी पकड़ में आती है, ऐसा होता है? ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स सीरियस कितने हैं। ओके। अब एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज है ऑटिज्म के अंदर। बहुत बार पेरेंट्स ये मानना ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे को किसी सहायता की जरूरत है। अक्सर ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर 1 साल से लेकर 3 साल के अंदर ऐसे बहुत से लक्षण माँ बाप को देखने को मिलते हैं, जिनसे वो जान पाते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है। आंखें नहीं मिला रहा वो आपके साथ, जवाब नहीं दे रहा आपके बुलाने के ऊपर, टिक नहीं रहा एक जगह पे, इधर दौड़ रहा है उधर दौड़ रहा है। बहुत बार आपको लगता है उसको समझदारी नहीं है उतनी, बोल नहीं रहा है। अपने आप में ये इतने लक्षण हैं, माँ बाप इजीली देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे को ऑटिज्म के साथ टैग कर दिया जाए। बच्चे की कमी स्वीकारना नहीं चाहते। जी जी जी। और उसका एक बड़ा मेजर रीजन है, अनलकीली, क्योंकि ये बीमारी पहले वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं पे आज गूगल कर लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, वहां कह दिया जाता है कि आज अगर आपको ऑटिज्म हो गया है, ये कंडीशन लाइफ लॉन्ग रहेगी, इस बच्चे को केवल आपको सपोर्ट देनी है, ये बच्चा ऑटिज्म से बाहर नहीं आ पाएगा। और आयुर्वेद क्या कहता है? देखिए, आयुर्वेद में हम जब बात करते हैं उन्माद की, तो उन्माद एक ऐसा रोग है जिसको हम कोरिलेट कर सकते हैं ऑटिज्म से। लेकिन आयुर्वेद में भी मैंने ये देखा, इन पर्टिकुलर ऑटिज्म का जिक्र नहीं था। यही कारण बना आयुर्वेद के साथ मैंने साइकोथेरेपी स्टडी की। हाँ, ये इस पर मैं आना चाह रही थी कि आप जब ऑटिज्म के क्योर की तरफ जाते हैं तो आप आयुर्वेद के साथ साथ वो साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बिल्कुल दो अलग अलग पद्धतियां हैं, मतलब कहाँ आयुर्वेद और कहाँ साइकोथेरेपी। आपने ये फॉर्मूला कैसे इजाद किया? ये फॉर्मूले का जो बेस है जी, वो आयुर्वेद में ही है। हाँ। हमारा आयुर्वेद बहुत प्यारा है। आयुर्वेद क्या बताता है कि अगर चिकित्सा करनी है तो देव विपाशे, युक्ति विपाशे, सत्वावज्य, ये 3 प्रकार की चिकित्साएं आयुर्वेद में बताई गई हैं। इसमें देव विपाशे चिकित्सा है, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी बोल देते हैं, जिसमें हम परमात्मा की शरण में जाना बोल देते हैं, वो देव विपाशे है। युक्ति विपाशे, जिसमें दवाइयां आ जाती हैं, पंचकर्म आ जाता है। लेकिन सत्वावज्य, मन को जीतना, मन की चिकित्सा, जिसमें साइकोथेरेपी आ जाती है। सो यही कारण था कि जब मैंने पाया कि देव विपाशे चल रहा है,
युक्ति विपाशे चल रहा है, सत्वावज्य मिसिंग है जो सबसे ज़रूरी चाहिए ऑटिस्टिक बच्चों में। सो सबसे पहले मैंने एमएससी साइकोलॉजी किया, फिर दोनों चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर के पीएचडी किया, रोल ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। आज मालिक की दया से मैं डेलेट स्कॉलर हूँ इसी सब्जेक्ट के अंदर, और आयुर्वेद और साइकोथेरेपी इन दोनों को मिला करके बच्चे धीरे 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 ऑटिज्म से निकलने लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई आपकी सक्सेस स्टोरी मतलब जो आपको भी याद आती हो, जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहें, कि कोई पेरेंट्स आपके पास आए हों और बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हो और फिर वहाँ पर आप वो रोशनी की किरण बनकर आए और उनकी ज़िंदगी आपने बदल दी? इंसान का सबसे पहला जो केस होता है ना, जनरली उसे याद रहता है, तो मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरे मैथ्स के टीचर, नाम नहीं लेना चाहूँगा प्राइवेसी के लिए जी, मैथ्स में उनसे पढ़ा करता था। मैं नया नया डॉक्टर बना था, उनका जो बच्चा था वो बोलता नहीं था। मेरे पास आए, उन्होंने बोला भी तुम आयुर्वेद पढ़ रहे हो, इसमें कुछ है इसके लिए। हमें तब आचार्य चरक की चरक संहिता के अंदर मेद्य रसायन के बारे में बताया गया था। मंडूक पर्णी स्वरसा प्रोज्या शिरेन यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसो गुडुच्या अस्तु स मूल फल पुष्प खलु शंख पुष्पया। मैंने कुछ नहीं किया, इन चारों को पकड़ा लिया और खुद दवा तैयार की, बच्चे को देनी शुरू कर। इसका थोड़ा सरल शब्दों में भी बता मंडूक दीजिए। पर्णी का स्वरस, सेंटाला एसियाटिका का स्वरस, तो मतलब ये आपने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स बताए। जी 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 आचार्य चरक ने 4 इंग्रेडिएंट्स और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है उसका जो है तरीका बताया है। सो यहाँ मुझे था शायद समय की कमी है तो मैं डिटेल्स में नहीं गया। मतलब वो दवाई खुद बनाई? वो मैंने खुद बनाई जी। वो दवा नहीं थी, मैंने हर्ब्स कलेक्ट की, उस बच्चे को दी, जिसमें ब्रह्मी का मैंने स्वरस यूज किया क्योंकि हमारे वहाँ मेडिकल कॉलेज में ब्रह्मी उगी हुई थी। तो बच्चे ने पहली बार पापा मम्मा बोलना शुरू किया, आई कांटेक्ट बढ़ा, उनमें उम्मीद जगी। उन्होंने मुझे बोला कुछ और कर, मेरे लिए वो सबसे पहली बार था। तो मेरे को हमारे टीचर्स ने सिखाया था शिरोबस्ती। अच्छा। एक खास प्रोसीजर है पंचकर्मा का, शिरोबस्ती। मैंने कहा वो करके देखते हैं। तो उसके लिए हमने घी बनाया, वचादी घृत, वो भी खुद बनाया क्योंकि मार्केट में तब नहीं मिलता था। तो जब हमने शिरोबस्ती स्टार्ट की तो उस बच्चे ने सेंटेंसेस बोलने शुरू कर दिए। अब साइकोथेरेपी का काम यहाँ पे किया मेरे माताजी ने। अच्छा। मेरे माताजी क्योंकि वो आते थे तो उन्होंने बताया कि आप अपने बच्चे को हर चीज उसके बिना मांगे दे रहे हैं, उसको थोड़ी नीड क्रिएट करिए। तब मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं था, वो साइकोलॉजिस्ट थे, तो वो दोनों चीजें मिल गई कि घर के एक बुजुर्ग की गाइडेंस, हमारी पुरानी दादी नानियां साइकोथेरेपिस्ट तो थी। चलते चलते मेरा एक सवाल है आपसे और मुझे लगता है बहुत से व्यूअर्स जानना चाहेंगे। देखिए एलोपैथी में क्या होता है, मेडिकल इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, तो आयुर्वेद के इलाज में भी क्या ये सुविधा मिल पाना संभव है डॉक्टर साहब? मैं इस चीज़ पे खुशी से कहूँगा बिल्कुल संभव है, और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने आयुष के लिए इतना सब कुछ किया है। आज उनके प्रयासों के कारण हमारे जैसे जो सेंटर्स हैं जो ऑथेंटिक हैं, जहाँ पे सही डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो NABH सर्टिफाइड है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी NABH सर्टिफाइड है, और सभी मेजर इंश्योरेंस कंपनीज कैशलेस भी और नॉर्मल कवर भी आपके पूरे इलाज के लिए देती हैं। तो आप आयुर्वेद को भी ठीक उसी तरह से बिना अपने बजट को बिगाड़े हुए इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप एलोपैथी को करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर नवदीप शर्मा, एबीपी न्यूज पर हमारे साथ आने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए इतने सरल शब्दों में कि आयुर्वेद किस तरीके से रामबाण है, न सिर्फ शरीर के रोगों को दूर करने के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऑटिज्म मुक्त जीवन की सही शुरुआत है ऑटिज्म की सही जानकारी। Trusted by parents worldwide. Call now Dr. Navdeep Sharma, World Senior Autism Expert. 7791 006 006.